हरिः ओम। इमं देवा असपत्नगो सुवदवं महदे क्षत्राय महदे ज्येष्ठ्याय महदे जानराज्यायेन्द्रसेन्द्रियाय इमम मुख्यपुत्रममुख्यै पुत्रमस्य विष एक भूमि राजा सोमुस्माकं ब्राह्मणानाग्निराजा ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नागल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमवरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे चरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि चन्दनस्योपरि अक्षतां समर्पयामि कुलायिनि घृतवती पुरन्धिः स्योने सीदसदने पृथिव्याः अभितवारुदरावसवो गृह्णन्द्विमा ब्रह्मबीभिः सौभगायाश्विनाध्वर्जूषा दयतामिह त्वा हरिद्रादिसकलसौभाग्यमाङ्गलिकद्रव्याणि समर्पयामि ऋतुकालोद्भवपुष्पाणि समर्पयामि सुमाल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादिन्वय प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि सायंकाले नैवेद्यः चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रं प्रोक्षयेत् ऋतन्द्वा सत्येन परिखिञ्चामि धेनुमुद्रयाममृतीकृत्य ग्रासमुद्रया ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि